So first of all, happy Deepavali to all of you, and wish you a very happy and very sweet Deepavali. Okay, and there will be holiday on Friday. Therefore, there will be no class on Friday. The lecture class of the Friday is cancelled because of Govardhan Puja holiday, which was declared by the institute. Okay, let's start the class. Thank you for the holiday, ma'am. Thank you so much. In the previous run, we have started the discussion of georeferencing. Okay. Before I will start this georeferencing discussion, there is a very short assignment to you that you have 5 minutes time. Write whatever you have learned about the georeferencing in your copy. It is necessary that you people remember what was the procedure, because we have already discussed about the affine transformation, like how to perform the whole georeferencing procedure by using the affine transformation. So write it down, whatever you remember about the georeferencing process, what is georeferencing, and what are the different things that we have learned that time about the affine transformation, about the coefficient, about the meaning of the coefficient, about the equations, okay, about the GCPs, ground control points. We have covered till then. So start writing about it. First, get the description of georeferencing. Okay, what is georeferencing? What do you understand by georeferencing? Or how will you define the georeferencing? Write this thing properly. I will ask from you to read out what you have written down.
Okay. So Jayashree, Yes, ma'am. yes, Jayashree. Tell us about the georeferencing. Ma'am, georeferencing is a process where we assign known locations to unknown points on the scanned map. For doing this practical, go first we should go to raster option in the QGIS. No, Jayashree. Tell us about the theory, not about the classical. Ma'am, What is the purpose of georeferencing? Okay, I am asking you a question. What is the okay. purpose of georeferencing? The purpose of georeferencing is that for the scanned topographic map, initially we don't have any assigned locations for the coordinate system we are using. So to assign a particular assigning locations to that, we use georeferencing by Okay, okay. Wait a minute. So there okay. is a mistake. Everybody listen this thing that what you are saying, okay, like what she's telling us, maybe other students are also making the mistake that we are assigning the location. No, we are not assigning the location. What we have a scan map. The coordinate system of that one is random, or it may be in a scanner coordinate system. It may be in row column format. What we are Yes. interested in, we want that data in a map coordinate system. Okay, so this is what we are doing through georeferencing. We are converting the scanner coordinate system to a map coordinate system or to the earth coordinate system. Okay, now next question there, Shri. Why do we use affine transformation? Ma'am. Why do we use affine transformation? Ma'am, is this the based on previous class topic? Yes, I don't think so. You were present in that class, Yes, isn't it? yes, ma'am. Okay, I okay, can then see. explain the complete practical theory what No, we no, have done. no, yes. Okay. I will ask it from some other student. Yes, Bhagat. Okay. Bhagat, Yes, ma'am. what is affine transformation? Why do we use that one? Uh, uh, it is a it is a process of transforming the image uh, to accurately represent the geographic coordinate system. What is affine transformation? This is something mathematics. This is not about the image. What is affine transformation? Ma'am, to accurately represent the image is Okay. I changed am asking another way. Why do we use affine transformation? What is the purpose of using affine transformation? to accurately represent the coordinate system. No. How the accuracy is coming? Do we compute accuracy in affine transformation? No. These are a very generic sort of answers that student used to write in the answer sheet. Okay, and then they used to ask, "I have written the whole page. Why you have deducted the marks over here?" Means affine transformation is not about the accuracy, but still, what you are saying, you are means putting all the terms that you know related to the georeferencing. Do you want to revise your answer, Bhagat? No. Yeah. Okay, But I'm not going to accurate. the other. Yes, sir. Yes, yes, Okay. you are telling something? No. Okay, Krishna Kumar. Yes, ma'am.
What is the purpose of affine transformation? मैम अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन मींस मैम लाइक जब भी हम किसी मैप को ट्रांसफॉर्म करते हैं मैप कोऑर्डिनेट से रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स में, तो मैम उसका जो रेशियो या पहले की जो एक्चुअल मतलब एक्चुअल उसका पॉइंट्स का जो सिग्निफिकेंट हो वो चेंज ना हो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। लाइक अगर कोई पॉइंट अगर दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी मिड पॉइंट ही बना रहे। कृष्ण कुमार, हमने तो ऐसी कोई चीज आपको पढ़ाई ही नहीं है, अभी मिडिल पॉइंट वाली तो कोई चीज ही नहीं आई है। क्या मैम? गलत है कृष्ण कुमार आपका आंसर, आप पता नहीं ओके। क्या आंसर कर रहे हैं। Okay. So means all the answers are disappointing. Does anybody know why do we perform a fine transformation? Yes, ma'am. Ma'am, it is a basically mathematical conversion from source value to the target value, in which we follow some equations to find the unknown parameters. Like we give two types of equation, that is E is equals to TE plus A1x plus A2y, and N is equals to TN plus B1x plus B2y, where E and N are easting and northing, and Mm, that value I'm forwarding. Translation, shift in origin. Yes, ma'am. Translation, shifting from one coordinate system to another coordinate system. That is a kind of parameter, I think. Yes, ma'am. That's much. Okay. So all of you listen this thing carefully. Why do we perform a fine transformation? Because what is required? We have the coordinate of the scanner, the XY coordinate of the scanner. I will open this thing. As you can see on the screen, again I have opened the same map, P15 map. On the left hand side you can see the map is showing some random XY value, and on the right hand side map the exact latitude longitude values are coming. So I have shown you all these things in the previous turn, so I'm not going into the detail of this thing. But what is required? What you need to find out some relationship. Okay, you need to find out some relationship so that if you are putting your cursor at this position and you are getting the xy value as 1252 and minus 558, you need to convert it so that you will get the corresponding coordinate over here. Okay. So that you will get, like I am placing my cursor on this boundary intersection. So here you can see, if I will place my cursor, I am getting the 81.766, 25.448. I am placing my cursor on the scan map, then 1388 and minus 525. Basically what is needed, there must be some relation, isn't it? There must be some relation through which you can convert this scan map coordinate into the map coordinate system, scanner coordinate into the map coordinate. For that purpose, a fine transformation or maybe some other transformation function could also be used. It is not necessary that every time we are going to use a fine transformation. There are several options like second order polynomial distortion function, third order polynomial distortion function. But what we do, we go for the mostly for the affine transformation, because in most of the cases we do not have the error of bending, curving or something like that. So this is affine. This is georeferencing process. In georeferencing process, the very first thing is required to find out a relationship, to find out some function
through which if you put the XY value of the scanned map, it would get converted into the map coordinate system or latitude, longitude, northing or easting. That's why we have that affine transformation over there. Okay. So what is required? That if we mark some coordinate like 1, 2, 3, 4, 5 over here, it would get converted into the target coordinate system, which is the map coordinate system or latitude, longitude. So how this conversion will take place? This conversion will take place with the help of this transformation, which is known as the affine transformation. As you can see on the screen, the equation of affine transformation is given over here. This is the affine transformation equation. Okay. There are 6 unknown parameters over here, which are T, E, X, Y, Tn, B1, B2. Sorry, I'm repeating it again. TE, A1, A2, and Tn, B1, B2. Where TE and Tn corresponds to shift in origin, which is called translation. This is simple mathematics, okay? I'm not telling you anything new. There will be, when you are giving a new coordinate system to the scan map, there might be a shift in the origin. For that purpose, this TE and TN parameters are involved. Then A1 and B2, okay? A1 and B2 corresponds to the scaling parameter. If there is any change in the scale, then A1 and B2 are for the scaling, A2 and B1 are for the rotation. Okay, there can be straight, yes. So there can be some scaling, there can be some rotation, there can be some translation. These scaling, rotation, and translation, these three are the things which are catered by the affine transformation. For that purpose, there are coefficients that need to be determined. How these coefficients get determined? I have already given you a numerical. Okay, I have already given you a numerical. Are you able to find out that answer? Yes, ma'am. Ma'am, but we are not having that XY value of the fourth coordinate. That is why I've taken another value of P15, which was there in my map, ma'am. Yes. Okay. The answer might not be coming correctly because if you open repeatedly, the different extra value will come. Yes, ma'am. That is why I've taken all the new values, ma'am, which was given at that moment. Okay. So have you got this the Yes. latitude longitude correct of the fourth point? Yes, ma'am. Ma'am, I got eastern value that 82.003 and northern one to 25.2415. That is just 0.01 Yeah. difference. It's okay. So all of you need to do this numerical because it might come in the examination as well, because I have already described this affine transformation that if you get 3 coordinate and the 3 map coordinate and the corresponding coordinate, then you can identify the fourth one. So yes, we have covered till then that affine transformation, about the coefficient of affine transformation, and then about the GCPs are ground control point. Yes, there is some question. Ma'am, yes, ma'am. Ma'am, you told that TE and TN are translational parameters, and A and A1 and B1 are that shifting parameters. But ma'am, you told one more thing, that's rotational parameters. Which was that, ma'am? I'm repeating it again. TE and TN. Yes, ma'am. Okay, TE and TN are the translation parameter. TE corresponds to the shift in X coordinate and TN means shift in Y coordinate. Write it down. If you have confusion, write it down. Everyone, write it down. Yes, ma'am. TE, write down TE. Let's wait.
TE is equal to shift in X TN shift in Y. Okay. Then there is A1, which is scale in X. Then there is B2, which is scale in Y. Then A2, rotation in X. And then there is B2, rotation in Y. Ma'am, then that will be B2 in scale Y and in scale in Y. मैडम B2 दो बार आया है. ठीक है. A1 scale in X, B2 scale in Y, A2 rotation in X, B1 rotation in Y. मैम Yes. मैम जो अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन है ये बस सोर्स कोऑर्डिनेट्स को टारगेट कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज होता है. आपको हर एक मैप का जब स्कैनिंग आप करते हो तो स्कैन करने पर जो मैप मिलता है, स्कैन करने पर आपको ये मैप मिल गया. जी मैम. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड वाला मैप देख रहे हो तो उसमें कुछ एक्स वाई की कोई रैंडम वैल्यूज आ रही हैं. आपको इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि ये स्कैनर का है. हमें इंटरेस्ट किसमें है? हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में इंटरेस्ट है. इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में वैल्यूज को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो स्कैन करने के बाद जो मैप मिल रहा है उसके जो रैंडम एक्स वाई आ रहे हैं, हमको एक ऐसा रिलेशन निकाल लें, एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दें जिससे कि उसमें हम अगर ये एक्स और वाई की वैल्यू डाल दें तो इसके करस्पॉन्डिंग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वैल्यू हमें मिल जाए. ठीक है. तो ये जो फंक्शन है जिसमें ये एक्स वाई के कर से डालने पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल जाए, वो फंक्शन क्या कहला रहा है यहाँ पे? वो अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन कहला रहा है. जब हम अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं और अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन का जो इक्वेशन आपको दिखाया उसमें भी अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि वहां पर कुछ पैरामीटर्स हैं. एक्स वाई और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के सिवा भी 6 अलग अलग वैल्यू वहां पर TE, TN, A1, A2, B1, B2 ये 6 अलग से कोफिशिएंट लिखे हुए हैं. इनकी वैल्यू अगर आपको पता लग जाए तो हर एक एक्स वाई के करस्पॉन्डिंग आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल लोगे, है ना. तो ये पूरा प्रोसेस जो यहाँ पर इतनी देर से डिस्क्राइब किया जा रहा है वो यही है कि हम ये जो 6 अननोन पैरामीटर हैं इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल लें जिससे कि वो फंक्शन हमारा पूरा हो जाए और फिर हर एक एक्स वाई के करस्पॉन्डिंग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमें मिलता जाए. समझ में आ रहा है? मैम ओके. ओके देन इसको हम लोग आगे देखते हैं कैसे करना है. I am describing the whole procedure of georeferencing. You have learned about the theory. In the theory, you have learned about the
ground control points. We have learned about the affine transformation. After the affine transformation, there is a concept of residual error. Okay. So I'm just reading out the theory quickly, then I will demonstrate all these things on the GIS software. Okay. So how many points that are required in solving the affine transformation? The answer is 3, because corresponding to each GCP, corresponding to a single GCP, there will be 2 equations. So if there are 3 ground control points you mark, then how many equations that you will get? Total 6. So if you got 6 equation, you can solve the equation and get the value of all the 6 unknown parameters. But this is not sufficient, because we need to compute the error term, how much error is coming over there. For that purpose, what we have 2 types of error. First one is RMSE error, which is root mean square error. And along with that one, there is one more error, which is called the residual error. RMSE error is single, means RMSE error will be given for the whole georeferencing procedure. And the residual error will come corresponding to each of the GCP that you will mark. Okay. So if you remember in the laboratory session also, the very first practical that you have done was georeferencing. Over there you have marked the points, and I have told you that you need to note down the error that was coming. That error that we have noted down for the whole georeferencing process was the RMSE error. Now what is RMSE error? As it is given on the screen, the formula noted down in your copy. RMSE error is equal to under root of E1 square plus E2 square plus E3 square up to En square divided by n, where E1 is error for the first control point, E2 error for the second control point, E3 error for the third control point. If you have marked n control points, so En will be the nth error. Now, what does E1 means? Okay, what is the meaning of error in the first GCP? So this error is basically, these all are the residual errors, and the meaning of this error is that there will be 2 values. One is which is marked by you. Okay, whenever you perform the georeferencing, you have to enter the latitude, longitude of that very position. Second value is computed by the affine transformation equation. The polynomial distortion function that we are using, it will also compute that value. Okay. The difference between the computed value and the marked value, the distance between the marked value and the computed value is called the residual error. So as you can see in the next formula, the equation for the residual error is given over here. Residual error is equal to, it's like x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square. So this is the distance formula, isn't it? This is simple coordinate geometry. The distance between 2 coordinates is given by this equation, x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square. So here, instead of x1, we are writing xt, which is the true value, and d, which is the transformed value. Okay. So in this way, the error corresponding to the each control point will be computed, the distance between them, and finally there will be the RMSE error. So the affine transformation is usually fit using a statistical method that minimizes the RMSE. RMSE is defined by the formula which is given over here. Then the residual error is the difference between the true coordinate and the transformed output coordinate. A statistical method for estimating transformation equations is preferred because it also identifies transformation error. Control point coordinates sustain unavoidable measurement errors. A statistical process provides an RMSE, a summary of the difference between the true and the predicted control point coordinates. Ma'am? In this, yes? Ma'am, is true value and marked value both are same? Yes. In this one, there are 2 values. Xt is the true value, which is marked by the operator. And second one is the calculated value, which is calculated through the affine transformation.
Now, again you can see in this one, in this figure, this error concept is explained. The error, there are different points, okay. This circle points is showing the true location which is marked by the user or by the operator, and this cross symbol is for the computed value. So for every point, there are total 5 points on the screen. You can see for every point there is the distance between the mark and the computed is called the error. So this E1, E2, E3, E4 and E5. These are the errors which are coming through this process. Higher order transformation. Yes, we can go, as I have already discussed, affine transformation, which is the first order. You can go for the second or the third order. It depends upon whether there is any bend or curve. Then we go for the second or the higher one. First, I will show this process, then I will come to the resampling process. How do we do this georeferencing and other thing? Let's start. First step is, what is the first step of georeferencing when we do it practically? The very first thing is we need to define the coordinate system in which we are going to convert that map sheet. So since I have this G44P15 map of the Allahabad, so what I will do, I will give the coordinate of this one. Right now, look, when I open the raster dataset properties in the spatial reference, see, the spatial reference is undefined. Okay, the spatial reference is undefined, and see the top, the extent of this sheet. Top, left, right, bottom, some random values are coming over here. Instead of this, if I open the georeference sheet, I have another sheet which is already georeferenced. In this case, you will find, see, the spatial reference is given GCS, WGS 1984, angular, degree, datum, this one. The top left, bottom right, some latitude, longitude values are coming over here. See. So this is what we are trying to do over here. I am opening my non-georeference sheet and then I will assign the spatial reference first. So I will edit, I will select geographic coordinate system. In the geographic coordinate system, I will select world. In the world, I will use WGS 1984 projection system like this. Okay. So this is how the spatial reference system is added over here. See. Now the spatial reference is coming as GCS WGS 1984. So this is the very first step. The spatial reference is given. Now I will start. I will open this map sheet. See, now the coordinates are random, but it is coming in decimal degree. The values are not correct, but previously it was unknown unit if you remember, but now we have decimal degree. How do we start? We zoom into one of the coordinate corner, okay? One of the corner, as I have already told you, always think about a paper sheet that you need to fix it on the notice board. So the first thing is, how will you pin it? First of all, you will mark on all the 4 corners. First of all, you will put the pin or the tape on all the 4 corners. Similarly, over here also, I will place my control points in all the
So I will place my control point at all the 4 corners. So see, the georeferencing tool is open, layer is selected as P15.jpg, and this one is the app control point. With the app, somebody mic is not on mute, somebody is not on mute, please mute yourself. After the app control point, there is another table, view link table, through which we can see the error. Okay. So what I will do, I will mark the very first point, input x and y. Okay. See, some random x, y value is right now coming. I will place the value. What will be the x? Okay, Muninder Kumar. Yes, ma'am. What will be the x? You don't know? Muninder, do you know or not? No, ma'am. Okay, then Ruchi. Yes, Ma'am, Ruchi, what will 81 be degree the 45. No, again, Ruchi, you are doing the mistake. What will be the x? Ma'am, We are 81 degrees. Ma'am, 81 degree 75 seconds. Sorry, ma'am. again, again there is mistake. How can you say 81 degree 75 minute? It is 81.75, isn't it? Point. Okay, ma'am. Okay, ma'am. When you are inputting any coordinate inside the computer, Yes. as I have told earlier, you need to convert it from DMS to the DD notation. So when you are doing this conversion from into the DD notation, you cannot say 75 as minute or as a second. Okay, what will be y? Ruchi, what will be y? Why, ma'am? 22.5. 25.5. 25.5. 25.5, ma'am. Yes, ma'am. Yes, okay. So these are the x and y coordinate, and if there is any confusion still, make sure that all of you remember that x and y coordinates are given through longitude and latitude. Longitude corresponds to x and latitude corresponds to y. Okay. So since this one is the intersection of this 81 degree 45 minute longitude and 25 degree 30 minute latitude. So the intersection point will be 81 degree 45 minutes and 25 degree 30 minutes. Since we are putting this value in the computer, instead of using DMS notation, we will use DD notation, decimal degree notation. So 81 degree 45 minute will be equivalent to 81.75 degree and 25 degree 30 minute will be equivalent to 25.5. Okay. So first point has been marked. Let's see. No. As you can see in this table, the x source, y source, x map, y map is like this. But the residual error is not coming. Why? Because you cannot compute the residual error before marking how many points? How many points, how many GCPs you need to mark in order to compute the error? Three, at least three, ma'am. Ma'am, 4 points. How many of you are saying 4? How many of you are saying 4? कौन कह रहा है 4 पॉइंट आएगा? कोई नहीं कह रहा 4 पॉइंट आएगा. सब कह रहे हैं 3 पॉइंट से आ जाएगा एरर. मैम 4 points. 4 से आएगा. प्लीज बाकी सब कह रहे हैं 3 से.
एक आंसर केवल यशोवर्धन का आ रहा है 4 का, बाकी सब 3 का है। मैम अभी तो 3 से काउंट किया था मैम, इसलिए 3 बोला। कैसे 3 से आ जाएगा? मैम अभी 3 इक्वेशंस हमने 3 पॉइंट्स से बनाए थे, तो इस क्या 3 पॉइंट से आपको एरर टर्म मिलेगी? आपको 3 पॉइंट से एरर टर्म मिलेगी ही नहीं। 3 पॉइंट से तो आपका अभी जो कोफिशिएंट है वो काउंट कैलकुलेट होगा। जब 4th पॉइंट लग जाएगा तब जाकर के कैलकुलेटेड और ट्रू के बीच का अंतर आएगा। देखिए इसको देखिए यहाँ पर, अभी देखिए यहाँ पर कोई रेसिडुअल एरर नहीं आ रही है। जब 3 पॉइंट मार्क करेंगे तो सारी 0 आ जाएंगी, और जब हम 4th पॉइंट मार्क करेंगे तब कहीं जाकर के यहाँ पर रेसिडुअल एरर आना शुरू होंगी। तो देखिए अभी हमने 1 पॉइंट मार्क किया है, नेक्स्ट पॉइंट मार्क करने जा रहे हैं। पहला कॉर्नर टॉप लेफ्ट का ले लिया, अगला टॉप राइट का लेंगे। आप लोग जब भी करें बहुत अच्छे से जूम इन करके इसको मार्क करें। फर्स्ट लेफ्ट देन इसमें तो ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा क्या? मैम 82। मैम बोलिए। मैम जैसे अभी मैम 3 इक्वेशन से हमने कोफिशिएंट निकाला है 3 पॉइंट से, तो 4 पॉइंट मार्क करने पे ही ये रहेगा। इस तरह अगर जैसे किसी समवेयर लोकेशन पे हमने 4 पॉइंट से या 5 पॉइंट से कोफिशिएंट्स निकाले, तो फिर उसमें +1 इक्वेशन करके ही एरर आएगा हमेशा, मतलब +1 पॉइंट से। बिल्कुल ओके मैम। +1 का होता है। यहाँ 3 पॉइंट्स मार्क हो चुके हैं। अब देखिए x source, y source, x map, y map, the residual, all the residuals are 0. Total RMS है वाई गलत ले लिया मैम, 25.25 आएगा मैम। 25.25 आएगा मैम। देखिए रेसिडुअल एरर 0, RMS एरर 0, नंबर ऑफ पॉइंट्स 3। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिए 4th पॉइंट मार्क करने जा रहे हैं। 4th पॉइंट पे देखिए हम जैसे ही अपना कर्सर भी लेकर के जा रहे हैं, नीचे वैल्यूज को देखिए, नीचे वैल्यू भी कुछ कुछ उसके आसपास आ जा रही है। यहाँ पर वैल्यू हमारी 81.75 आएगी और 25.25 आएगी। नीचे अभी नीचे जहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिखते हैं वहां पे भी देखिए, उसको हम मार्क भी करने जा रहे हैं। It's 81.75, 25.25। ओके, यहाँ पर अब 4 पॉइंट्स मार्क हो गए। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ग्रीन और रेड कलर के 2 क्रॉस दिख रहे हैं और उनके बीच में ब्लू कलर का एक लाइन दिख रही है। ठीक है, यही बात अभी रेसिडुअल एरर के लिए करी जा रही थी। इसका लिंक टेबल देखिए। सो रेसिडुअल एरर इज कमिंग 0.00016, सभी के लिए 0.00016 की एरर आ रही है और आरएमएस एरर भी 0.00016 की आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर सेलेक्टेड है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, यहां तक तो समझ में आ गया ट्रांसफॉर्मेशन और इसके एरर सारा? कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। Ma'am means the distance between this black and red crosses that blue line, that much is the error or residual part. That much is the residual error. The distance between the green and the red. Green is the mark point, which is the true point. Red one is the calculated point. That it is calculated by the affine transformation. So the distance between the red cross and the green cross, which is shown by the blue color line, this is the residual error. And this is how the residual error is computed for all the 4 control points that I have marked. Okay, if you move to any of the
GCP or control point, you will find that there are two cross, green color and red color cross. Okay, so these all are the marked and the computed cross. The distance between them is shown by the blue color. This blue color is the residual error. The distance between these 2 points, it is giving you the residual error, and with the help of all the 4 residual error, the next one, which is the RMS error, is computed. Okay. The next question is how many control points that we need to mark. We never mark the minimum number of points, like the minimum required point are 3. For the computation of the error, minimum required number of points are 4. But we do not mark just 4 points. We go on marking. Okay. There is no hard and fast rule, but usually when we use affine transformation, somewhere 15 to 16 points are sufficient. 15 to 16 points are sufficient because every time when you mark a control point, the coefficients will be recomputed. The coefficients will be computed again and again as you mark the number of points. Therefore, there is a law of diminishing error. Means after reaching a point, if you mark the control point, it doesn't have any impact on the output. That's why if you have the affine transformation, if you are using the affine transformation, you will mark 15 to 16 points. And again, it depends upon the data. Like if I am using this map, the data is more or less very straightforward. Therefore, 6 to 7 points are sufficient for the such type of map because there is as such no error, there is no skew distortion or anything on the map. 4 to 5 points are sufficient. But instead of map, suppose there is an image that you need to georeference, you need to mark at least 16 to 17 points for the affine transformation. Okay. So this is, once you have done this thing, you have marked the control points in this way. The next step is rectify. That's right. Yes. Rectify means resampling over here. And now you can see in the resampling, I have to select one of the type of resampling. 3 options are coming over here. Nearest neighbor, bilinear interpolation, cubic convolution, okay, and whatever you want to put over here. Rest of the details are not important, but the important thing is resampling type. Now, why we are doing this resampling? The next question is this, okay. So let's move to the next one. Attribute interpolation by resampling. After the coordinate transformation, the position of the original cells in the raster layer may have been reoriented. Changing the coordinate system may change the direction of x and y axis, and the GIS system often requires the cell edges aligned with the cell coordinate system. Hence, new cells often do not correspond to the same location or extent as the old cells. Cells must be resampled because the new and the old cells represent different areas. Cell centers in the old coordinate system may not coincide with the cell centers of the new coordinate system. So the average value represented by each cell may be recomputed. New attribute values will have to be interpolated for cell orientation to the coordinate system. There are 3 commonly used resampling methods. First is nearest neighbor, in which attribute value equal to that of the nearest original cell is assigned to the corresponding cell in the output raster layer. Bilinear interpolation, in which the attribute value of a particular cell in the output raster is determined by taking a proximity weighted average of the attribute values of 4 original grid cells nearest to it. Cubic convolution, in which attribute value of a particular cell in the output layer is computed based upon the weighted average of 16 original grid cells surrounding it. Only the nearest neighbor method does not change. This point is important. Only the nearest neighbor resampling method does not change the attributes of the original cells assigned to the reoriented grid cells. Okay. So are you getting what is happening over here? You can see this thing on the in the figure also. In this figure, okay,
In the background, there is the input raster. Okay, this one is the input raster, and this one is the output raster, whose scale has been changed, who has got tilted now. Isn't it? There is a rotation, there is the scaling in the output. If you try to overlay it on the input raster as it is given over here, you will find that it is not matching with any of these cells. Now we have the cell corresponding to this very location, but we do not have any cell value corresponding to this location. Therefore, we are doing the resampling. What is the purpose of resampling? The purpose of resampling is to assign a coordinate corresponding to a cell because of the reorientation, because of the change in the scale. The output raster cell will not have the corresponding input raster. That's why we are doing the resampling. ठीक है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट में सेल का साइज, उसका ओरिएंटेशन बदल गया है। अब इनपुट रास्टर की जो पहली सेल है, टॉप लेफ्ट सेल, और जो आउटपुट रास्टर की जो टॉप लेफ्ट सेल है, वो दोनों तो अलग अलग जगह आ गई। हमारे पास इस लोकेशन का कोई वैल्यू है, लाइक कोई पिक्सल वैल्यू है, कोई उसके करस्पॉन्डिंग अगर कोई एट्रीब्यूट होगा तो वो एट्रीब्यूट वैल्यू इस लोकेशन के करस्पॉन्डिंग है, आउटपुट रास्टर के करस्पॉन्डिंग नहीं है। अब क्या करेंगे? अब रीसैम्पलिंग करते हैं। रीसैम्पलिंग करने के जो 3 तरीके बताए गए, इनको इस फिगर में और क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब चेंज हो रहा है ओरिएंटेशन, तो यहाँ पर अलग अलग मेथड है। पहला है नियरेस्ट नेबर, जिसमें केवल एक सेल को, यहाँ पहले वाले फिगर में देखिए इस ब्लैक कलर के डॉट के लिए एक ही क्रॉस लिया जा रहा है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? यहाँ पर ब्लैक कलर का डॉट पे पोजीशन पे जो वैल्यू कैलकुलेट करानी है, उसमें 4 नियर बाय सेल्स को लिया जा रहा है और फिर इसकी वैल्यू एक वेटेड प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस करके बाइलिनियर इंटरपोलेशन की टेक्निक को यूज करते हुए किया जा रहा है। लास्ट वाले में आप देखिए, इसमें नियर बाय 16 सेल्स को कंसीडर किया जा रहा है और फिर वो वैल्यू यहाँ पर असाइन की जा रही है। इसको बोला जाता है क्यूबिक कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, तो क्या यहाँ पर निकल कर आया? एक बार जब जियोरेफरेंसिंग में अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जो कोऑर्डिनेट्स, हर एक सेल का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लिया गया, उससे सेल का पोजीशन जो है वो बदल जा रहा है। इस बदले हुए सेल पोजीशन के करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू निकालने की जरूरत होती है। वो हम कैसे निकालते हैं? वो रीसैम्पलिंग के थ्रू निकालते हैं। रीसैम्पलिंग करने के 3 अलग अलग तरीके हैं। नियरेस्ट नेबर एक सेल को लेता है जो सबसे नजदीक की होती है। बाइलिनियर इंटरपोलेशन नियर बाय 4 सेल्स को दे लेता है। क्यूबिक कन्वोल्यूशन नियर बाय 16 सेल को लेता है। प्रॉब्लम लास्ट के 2 में क्या आती है? बाइलिनियर और क्यूबिक कन्वोल्यूशन में इसमें ओरिजिनल सेल वैल्यू नहीं आती, बल्कि कुछ आप कैलकुलेशन करके वैल्यू निकाल रहे हैं। अब सपोज जो पॉइंट है जिसका आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो बॉर्डर लाइन पर है। एक साइड वाटर है, एक साइड सैंड है, और ये पॉइंट जो है वो सैंड को करस्पॉन्डिंग है। अगर आप 4 पिक्सल ले रहे हो वैल्यू, जिसमें 2 वाटर की आ जा रही है, 2 सैंड की आ जा रही है, उसके बाद आप उसका एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो ना तो वाटर को रिप्रेजेंट करेगा, वो ना तो सैंड को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि दोनों के डीएन वैल्यू में बहुत अंतर है। आप लोगों को पता ही होगा कि वाटर का डीएन वैल्यू बहुत लो होता है, सैंड का बहुत हाई होता है। एक बहुत हाई और बहुत लो वैल्यू को अगर आप एवरेज आउट करेंगे तो एक हाइब्रिड पिक्सल वैल्यू जनरेट हो जाती है, हो जाएगी ना, जो ना तो वाटर को रिप्रेजेंट करेगा ना तो सैंड को रिप्रेजेंट करेगा, वो एक हाइब्रिड हो जाएगा। इन्हीं प्रॉब्लम को देखते हुए ज्यादातर टाइम हम नियरेस्ट नेबर को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि नियरेस्ट नेबर में एग्जिस्टिंग सेल वैल्यू ही ली जाती है। तभी वहां पर हम बोले तो इसको ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट्रीब्यूट वैल्यू केवल नियरेस्ट नेबर के केस में चेंज नहीं हो रही है, बाकी की 2 में नीचे के उसमें वैल्यूज को चेंज किया जा रहा है। तो ये पूरा जियोरेफरेंसिंग का प्रोसीजर है, जिसको बहुत डिटेल में हमने समझाया है और पूरा सॉफ्टवेयर पे करके दिखा रहे हैं, जिससे कि ये एकदम क्लियर हो आप लोगों की जियोरेफरेंसिंग कैसे होती है। जियोरेफरेंसिंग अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है, वो थोड़ा सा अपना बुक वगैरह को रेफर करे, क्योंकि इससे ज्यादा तो हम क्या एक्सप्लेन करेंगे। अगर कोई डाउट रह रहा है तो उसको जरूर बुक से जाकर के क्लियर करिए। तब भी कुछ है तो आप पूछिए क्वेश्चन, जो चीज आपको नहीं समझ में आई है। ओवरऑल प्रोसीजर पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, आप एक उसको स्पेशल रेफरेंस देंगे,
उसके बाद पॉलिनोमियल डिस्टॉर्शन फंक्शन सेलेक्ट करेंगे जो कि अफाइन सेलेक्ट किया गया। अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन सेलेक्ट करने से क्या होता है, आप एक फंक्शन देते हैं जिससे कि स्कैनर के जो कोऑर्डिनेट हैं उसको मैप के कोऑर्डिनेट में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड करने के लिए एक कोई फंक्शन की जरूरत होती है, ठीक है। उसमें जो कोफिशिएंट्स आते हैं उनको कैलकुलेट कराना रहता है, इस कारण से जीसीपी मार्क किए जाते हैं। जीसीपी मार्क करते टाइम कोई ना कोई एरर आ जाती है जो मार्क और कंप्यूटेड के बीच का अंतर होता है, उसके लिए आरएमएसई एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर, आरएमएसई और रेसिडुअल एरर को कंप्यूटेशन बताया। फाइनल आखिरी स्टेप होता है रीसैम्पलिंग का, जो बताया कि ओरिएंटेशन, पोजीशन ये सब चेंज हो जाते हैं सेल के, उनके करस्पॉन्डिंग इन न्यू पोजीशंस के करस्पॉन्डिंग क्या सेल वैल्यू रहेगी, क्या एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगी, इसके लिए रीसैम्पलिंग परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक में? Yes, ma'am. Ma'am, Yes. in root mean square error, it means that we increase the number of points. As we increase the number of points, the error gets reduced. Is it so? No, it is not necessary. Okay, ma'am. It is not Ma'am, necessary. Many times inverse may also occur that yes, as ma'am. you increase the number of points and if you are not marking the point properly, then there is a chance that the RMSE will increase. Okay, ma'am. Okay. So once this is the method for map georeferencing, there is another thing called image-to-image registration. The thing that I have explained there, or the thing that you have done in the practical, is the easiest thing. Okay. Since we are not going into the image because this one is the GIS, this image part is concerned with the remote sensing, with the satellite image processing. So that's why I will not cover this part in this course. In the next semester, when we will have SIP, I will cover this thing. But yes, for the knowledge purpose, I'm just telling you this thing, that instead of map, there can be an image. Okay. In that case, what we will do? We will do image to image or image to map registration. Why? Because in case of the map, the latitude and longitude are mentioned over there. In case of image, you will not find any latitude, longitude. Therefore, you have to mark the GCP in a little bit differently. So this is about the image to image or image to map registration or rectification. So, okay, then there is a 10 minutes break. It's already 12 o'clock. I'm giving you 10 minutes break and then I will continue to some other referencing process about the place name, about the gazetteers, about the geocoding. So 10 minutes break. After that, I will continue this class.
Let's start the class again. So till now we have discussed about the georeferencing. There is one question which is given over here. Try to solve this by yourself. Okay, compute the fourth point using affine transformation. In this one, digitizing unit and projected units are given. So this first two xy are for the scanner coordinate. Next xy is for map coordinate or projected coordinate. So the 4 points, the 3 points are given, the xy and the corresponding projected xy is given over here. The fourth digitizer unit is given. You need to compute the corresponding output. Okay. You need to find out the answer of this one. Now, another way of georeferencing is place name, which is the informal means of referring any place. So place name is in our day-to-day correspondence, in our day-to-day conversation, we use the place name to refer any of these places. Just like a dictionary that we use for the words, there is a dictionary of place names also, which is called the gazetteers. What is gazetteer? Gazetteer is like this. Okay. You can see this thing on the screen. In this one, the place name is given. Okay. Then the information is location, its type, everything is given. Like name is Peru, type is country, location is longitude, latitude, the extent of Peru, the country Peru, lat long extent is given. So this is the gazetteer. Just like the dictionary for words, there is a dictionary of place name that will give you the type, its extent, its lat long extent. This is called gazetteer, and the process of finding anything inside this gazetteer is called geoparsing. Okay. So dictionary of place names are called gazetteers. They contain descriptive information about named places, which can include their geographic location, types, and other information. Gazetteer plays several roles in the information management. For example, information retrieval. Gazetteer provide translation between informal and formal means of georeferencing. To do this, they link place names to the geospatial footprints, means lat long. One application that uses this translation probability is known as geoparsing, where place name references and text are looked up in a gazetteer so that the geospatial coordinate can be associated with the text. Next, geocoding. This geocoding is very popular thing. In many of the applications, you will find that people are using geocoding. This is something that is practically very useful. You will find several researches which are going on. They are not concentrated on geocoding, but they are always using geocoding. For example, like there are some of these studies regarding the transportation mode of the children who are going from home to school. For this commutation between home and school and back from school to home, they need to identify the path. Okay. So in most of the cases, the location of the school is given. There is no problem in that one. But how will we find the location of a child? Okay, how will you find the location? The address will be there, but the corresponding latitude, longitude will be missing in the student's address, isn't it? So what is required over here? We require some method through which we can find the latitude, longitude of the child's residence. One way of doing this is we can do the field survey, but it is a very difficult thing, and there are thousands of students who are studying over there. So this is not always possible to go for the ground survey, that we take the GPS and collect the location. One of the easier method is geocoding. And what is geocoding? In geocoding, we convert the address into the corresponding latitude, longitude. Okay, this is what happening in geocoding, that through geocoding we will convert the given address into the latitude, longitude.
How this thing is done? This thing is done based on the database of roads, based on the database of residences. This is not possible in the unplanned area. Keep this thing in mind that if I want to do this geocoding thing in some unplanned place of my city, it will not be possible. You can do this geocoding only in the planned places. Those cities who are built using some well-planned manner, like I can use this geocoding for the Chandigarh, which is a well-planned city, but not inside some slum area which is developed in an unplanned way. So basically, in geocoding, you will have the address of a street, you will have the number of houses, number of residents that are present over there. With the help of this one, the approximate location will be given through geocoding. Geocoding is not accurate thing. We are estimating the latitude, longitude. We are not actually collecting that one. So it may have the error inside the geocoding, but with the help of the residence information and the street information, the location of that place could be predicted. So address matching or geocoding is the process of matching general attribute information to the geographic location on a street network using a street address. For example, a tabular address register can be matched to the comprehensive digital street map to produce a GIS point layer showing the location of each household, where this is sometimes called geocoding. It needs a database containing the record representing the geometry of street segments between consecutive intersections and address ranges on each side of the segment. Most countries with street address system, the number of on one side of the street are even numbered and those on the other side are odd numbered. With this information, GIS can locate any given address on the street network by address matching. For example, address on the street in this figure ranges from 100 to 400. Okay, so this is the range 100 to 400. This is the address range. An address value 200, where it will be located. So it would probably be placed at a location 1/3 of the length of the street segment. Determining the address location requires interpolation, thus it is not the exact, but usually close enough for most of the purposes. So this is the geocoding. Okay, geocoding में क्या हुआ? Yes. Ma'am, there can be two left, two right, because ma'am, without designating in which way we are going. If we are going from one side, that can be left side. If we are coming from opposite side, that can come on right side. Then how this confusion is being reduced? If you remember that you need to build a topology. No, this is not for means. In this one, the topology that is created, with the help of that one, the left and the right will be fixed. Okay? On that basis, the left and right side will be estimated. Okay. Okay, ma'am. Thank you. So this is the geocoding. इसमें आपके पास में street का address रहेगा. मतलब ये कोई यूजर के पास पर्सनल डेटा नहीं होता, ये जहां भी आप यूज करते हैं वहां पर एक स्ट्रीट एड्रेस, यहाँ पर जैसे पहला रिक्वायरमेंट बताया गया कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रीट इंफॉर्मेशन डेटाबेस पूरा रहना चाहिए, जिसमें ये पूरा इंफॉर्मेशन रहता है कि एड्रेस किस तरीके से लोकेटेड है. जैसे इसमें एक एग्जांपल, इसमें बहुत सारा चीजें पॉसिबिलिटी पर है कि जैसे सपोज मान लिया गया कि किसी देश में सारे इवन नंबर के घर लेफ्ट साइड में रहेंगे, सारे ऑड नंबर के घर राइट साइड में रहेंगे. तो उसके बेसिस पर यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन है कि एक ऑन एन एवरेज एक घर का एक हमने अंदाजा ले लिया कि एक घर का जो विड्थ होगा या उसका एरिया जितना होगा वो इतना होगा. उसके बेसिस पर ये अप्रोक्सीमेशन होता है. इसमें सिग्निफिकेंट एरर आ सकती है. इस कारण से जियोकोडिंग कोई एरर फ्री मेथड नहीं है. ये एक जैसे लमसम एक एग्जांपल दे दिया गया. जैसे सपोज एक एग्जांपल के थ्रू आपको हम दिखाते हैं ये चीज. इस एग्जांपल में जैसे आप देख सकते हैं, एक आपको एक पूरा नेटवर्क दिखाई दे रहा है ना. इस पूरे नेटवर्क में एक पूरा स्ट्रीट का नेटवर्क है स्क्रीन पर, और यहाँ पर कुछ ब्लू कलर के पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं. ये फायर स्टेशंस हैं.
यहाँ पर हमारे पास में पूरा रोड नेटवर्क अवेलेबल है। यहाँ पर हमारे पास में जो फैसिलिटीज 43 यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पैनल में, तो यहाँ पर 43 फायर स्टेशंस लोकेटेड है। अब सपोज कहीं से डिस्ट्रेस कॉल आया कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पर कुछ इंसिडेंट हुआ है, तो वहां पर एक मतलब जो भी विक्टिम है या कोई भी व्यक्ति जो फोन कर रहा है वो अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं बता सकता। अगर हमसे किसी भी जगह जाकर के या हम आपसे पूछे तो आप अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के टर्म्स में तो नहीं बताओगे किसी को, पोजीशन आपको पता होगी इस समय। आप क्या बोलते हो कि मैं इस पर्टिकुलर जगह पर खड़ा हूँ, जैसे अभी मैं बोलूँ तो मैं GISL MNIT इलाहाबाद 2110004 ये मेरा एड्रेस है इस समय। अब ये लोकेशन फाइंड आउट कैसे करी जाए, ठीक है। इसको अगर यहाँ पर इस एग्जांपल में देखें कि यहाँ पर एक फायर का पूरा फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर कहीं से कॉल आता है कि यहाँ पर फायर इंसिडेंट हुआ है और यहाँ पर हमें हेल्प करिए, तो यहाँ पर सबसे पहले उस व्यक्ति का एड्रेस लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उस व्यक्ति का हमने एक एड्रेस लेंगे, इसमें एड्रेस हम लिख लेते हैं, जस्ट वेट करिए। यहाँ आपको एड्रेस सही पता होना चाहिए, रैंडमली कोई भी वैल्यू नहीं जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इंसिडेंट की लोकेशन पर आप देख रहे हैं, यहाँ लेफ्ट साइड पैनल में इंसिडेंट है, हम इंसिडेंट की लोकेशन फाइंड एड्रेस, फाइंड एड्रेस पे जाते हैं और यहाँ पर हम अपना एड्रेस डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे दिया गया 1202 BLVD, ये कोई एड्रेस है यहाँ का। अब इसको हम फाइंड कराते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये एड्रेस जो है फाइंड होकर के आ जा रहा है। देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का सर्कल बन रहा है, इसको हम ऐड करा दे रहे हैं एंड एज नेटवर्क ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ब्लू कलर का या सियान कलर का, लाइट ब्लू कलर का यहाँ पर एक स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। यहाँ पर ये कैसे आया, यहाँ पर हमने जो एड्रेस डाला उसके करस्पॉन्डिंग लोकेशन है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ जियो कोडिंग का ऑपरेशन हुआ है। यहाँ जो भी एड्रेस आप डालेंगे ये कोई रेलेवेंट एड्रेस होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर इसको देख करके डाला था। लाइक सपोज हम कोई दूसरा एड्रेस डाल करके देखते हैं। तो अब ये अगर हम दूसरा एड्रेस देखें, देखिए ये उसके बगल में जाकर के लोकेट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जियो कोडिंग हो रही है कि यहाँ पर अगर कोई स्ट्रेस कॉल है तो वहां पर उसका लोकेशन आ गया। बाकी इसके बाद जाकर के वेट करिए, मैम मैम क्या ArcGIS और QGIS के फंक्शंस ऑलमोस्ट सेम है? हाँ ऑलमोस्ट सेम होता है, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। ओके। आपको चीजें थोड़ा सर्च करनी पड़ेंगी। QGIS में थोड़ा सा इंटरफेस अगर आप देखें तो कभी कभी आपको लगेगा कि ArcGIS, क्योंकि हम लोग शुरू से ArcGIS पे काम करते हैं इसलिए
ज्यादा इजी लगता है आरजीआईएस पे काम करना, बट आप जिस भी अपने एक मिनट वेट करिए, मैं आंसर कर रही हूँ उसको। हाँ ठीक है, इसको मैं पहले ये एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपके क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर जैसे अगर हमको ये कोई भी फैसिलिटी अब हमको मिल गई, अब सपोज 3 का कट ऑफ है, नंबर ऑफ फैसिलिटीज टू फाइंड, सपोज 4 हमने कर दिया, ठीक है। हमको 4 फैसिलिटीज नियर बाय 4 फायर स्टेशन पे हमने ये कॉल भेजी। ट्रेवल का डायरेक्शन जैसे हम बता रहे हैं, फायर के केस में इंसिडेंट टू फैसिलिटी होगा कि फैसिलिटी टू इंसिडेंट होगा। ऑब्वियसली फायर के केस में फायर की वैन्स जो होंगे वो फैसिलिटी से इंसिडेंट के प्लेस पर पहुंचेंगी। वहीं पर सपोज कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया, वहां को मूवमेंट कहां से होगा, इंसिडेंट वाली प्लेस से विक्टिम को हॉस्पिटल की फैसिलिटी में लेकर के जाया जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें सेट कर दी, और देखिए ओके प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, इसको कुछ एग्जांपल एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है आज, ये हो नहीं पा रहा है। ओके, ये रिस्ट्रिक्टेड चेक। सो मेन पर्पस यहाँ दिखाने का तो ये एग्जैक्ट रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा है जैसा हमें दिखाना था, लेकिन यस जो मेन चीज हमको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करनी थी वो जियो कोडिंग की फंक्शनैलिटी थी कि किस तरीके से जियो कोडिंग यहाँ पर यूज होता है। एक क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया कि आरजीआईएस एंड क्यूजीआईएस दोनों ही अच्छे ऑप्शन है। आपको जीआईएस की जो बेसिक फंक्शनैलिटीज का रिक्वायरमेंट होता है वो दोनों ही सॉफ्टवेयर बराबर में देते हैं। QGIS में ऐसा नहीं है कि कोई फंक्शनैलिटी आपको जो बेसिक GIS जो जितना आप लोग करते हैं उस लेवल तक का मोस्ट ऑफ द थिंग्स प्रेजेंट है। इंटरफेस का हो सकता है किसी को, जैसे हम लोग क्योंकि ArcGIS को हमेशा से करते आए हैं इसलिए हमें ये वाला इंटरफेस ज्यादा अच्छा लगता है और ज्यादा इजी लगता है। QGIS थोड़ा सा नया या कुछ कम समय से चला रहे हैं, इस कारण से मे भी कुछ कभी कभी हमको QGIS डिफिकल्ट लगता है। तो ये अपने अपने वर्किंग पर होता है, जो जिसपे ज्यादा काम करता है वो उससे ज्यादा इजी फील करता है। कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी होती है जो आपको किसी एक सॉफ्टवेयर में ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि ArcGIS की सारी फंक्शनैलिटी QGIS में मिल जाए, वन मैपिंग नहीं है। इसी तरीके से QGIS कुछ ऐसे फंक्शनैलिटीज देता है जो ArcGIS में नहीं मिलती। जैसे इमेज प्रोसेसिंग की बहुत अच्छी फंक्शनैलिटीज QGIS में अब आ गई हैं। बहुत अच्छे प्लगइन्स आज के टाइम में हमारे पास में QGIS में अवेलेबल है। तो आप लोग के लेवल पर अगर बात करी जाए तो कोई भी दोनों ही सॉफ्टवेयर अच्छे हैं, और क्योंकि QGIS पर आप ऑलरेडी कर रहे हैं इस कारण से इस स्टेज पर बहुत जल्दी से सॉफ्टवेयर शिफ्ट नहीं करना चाहिए। एक बार एक कंप्लीट सेमेस्टर में आपने काम कर लिया, क्योंकि ArcGIS का इसीलिए एक्सपोजर आपको लेक्चर सेशन में देते हैं जिससे कि आप इसके भी इंटरफेस से एक थोड़ा सा उसको आपकी जानकारी में रहे कि कैसे हो रहा है। एक सॉफ्टवेयर चलाइए, थोड़े समय बाद आप एक भी सॉफ्टवेयर पर वर्किंग करना सीख जाते हैं, दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने में दिक्कत नहीं होती। थोड़ा सा चीजें मिलती नहीं है, आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है कई बार, बट मोर और लेस फंक्शनैलिटीज और मोर और लेस GIS के कॉन्सेप्ट थ्योरी अगर स्ट्रॉन्ग है तो प्रैक्टिकली आप उसको भी करना किसी भी सॉफ्टवेयर पर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जियो कोडिंग का पूरा हमारा डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट इज रास्टर एडिटिंग। रास्टर एडिटिंग मीन्स एक बार जब आपका रास्टर डेटा बनता है तो उसमें कुछ कुछ एडिटिंग करने की जरूरत होती है, जिसमें कुछ मेंशन है यहाँ पर।
इसको बहुत क्विकली हम देख रहे हैं, आप लोग अपने एंड पर इसको देख लीजिएगा। कॉमनली यूज रास्टर डेटा एडिटिंग फंक्शंस इंक्लूड फिलिंग द होल, लाइक अगर स्कैनिंग के बाद में कहीं कोई गैप रह जा रहा है तो उस केस में आप इस तरीके के गैप्स को फिल करते हैं। एज स्मूथिंग टू रिमूव or fill single pixel irregularities in the foreground pixels. De-swing ये important है, ये जरूरी है करना। To rotate the image by a small angle so that it is aligned orthogonally to the x and y axis of the computer screen. So as it was discussed earlier, many times the output is skewed. Like if you are doing the scanning, the output is not coming correctly because you have not placed this document properly on the glass plate. In that case, there will be skewed document. In the image processing also, you may have known that when there is a remote sensing going on by the satellite of any earth object, the tiles will get skewed over the time. In that case also, we need to do de-swing, although all these operations are already done by the distributing agencies. Speckle removal means some randomly high, randomly low value. Why this will occur? Like most of the common sources, dust. Because of the dust, there might be some very bright pixel, or because of some other reason, there can be some randomly dull pixel. So this is called speckle. In the images, we say it is a salt pepper appearance. Okay. Then delete and erase. This can be done. The sixth one is again important, skeletoning or thinning. Why it is important? Because most of the time we need to convert the raster data into the vector format. So when you are doing the digitization of any raster data, as you have seen in the case of road, it is of several pixel width, isn't it? So in that case, what you are doing, you are basically trying to create a raster to vector conversion for a single pixel. That's why many times we need to reduce the width to a single pixel. For that purpose, this is a skeletoning or thinning operation. Okay. So scan digitization usually requires some form of skeletoning. Particularly, the data are to be converted to a vector data format. Scan lines are often wider than a single pixel. One of the several pixels may be selected to specify the position of a given portion of the line. The same holds true for points. A pixel near the center of the point or line is typically chosen within the center of a line defined as the pixel nearest to the center of the local perpendicular bisector of the line. Skeletonization reduces the width of lines or points to a single pixel. Clipping to cut and remove some specific portion of the raster data. Then drawing and rasterization to add vector graphics or text to a raster image and convert the vector graphics to the raster form in a new image. Okay. So these all are the functions which are summarized over here. Next, we are going towards the raster geospatial data analysis. We will learn several operations, and broadly they can be classified as the local operation that are based on a single cell, neighborhood operations that are considering immediate neighboring cells, extended neighborhood operations, then regional operation that will consider the whole layer. Now we are starting from the very first one, which is the reclassification. And what is reclassification? The purpose of the reclassification is to create a new raster layer by changing the attribute value of the cells of the input layer. Reclassification operations are useful for a variety of purposes in raster data analysis. For example, simplification of raster images for use and land use change studies and conversion of cell values from one measurement scale to another for terrain analysis. Reclassification often required to generate a binary layer from results of the overlay analysis. Reclassification done in one of the following forms that are either logical or arithmetic operators. So first I will give you the example.
and then I will explain. Like suppose right now on the screen you have a land use layer. In this land use layer, different land uses are present: agriculture, barren, transitional, built up, forest, water, wetland, everything is present on the screen. Now suppose you want to study about the urban area. Okay, you want to study about the urban area and you are not interested in any other land use. Okay, you are not interested in any other land use. What you will need some way to remove all the other points, or you want to assign 0 cell value to all the other pixels and 1 to the urban pixel. Okay. For this purpose, reclassification is required. What the reclassification definition says: to create a new raster layer by changing the attribute values of the cells of the input layer. This is what the reclassification. So here in this case, suppose I do not want to see all the other land use classes, I just wanted to see the urban area. What I will do, I will perform this reclassify. As you can see on the screen, this reclassify tool is coming over here. In the input, I will take the land use. Okay, and now I will assign 0 to all, 0 to all, built up 1, and 0 for rest of them. Okay, so what will you expect? What type of output will you expect? I am giving 0 to all the land use types and 1 to the built up. आप कैसे expect करते हैं, कैसा output आपको दिखेगा इस समय? Anyone? मैम जहाँ जहाँ 0 है वहाँ डार्क ग्रे कलर हो जाएगा, और जहाँ 1 है वहाँ बिल्टअप का जो कलर पॉइंट सेट किया हुआ है उस कलर में आ जाएगा। कलर कोई फिक्स नहीं है, बट यस आपको एक बाइनरी इमेज मिलेगी, 2 अलग अलग कलर से बाइनरी इमेज मिलेगी। जहां पर अर्बन है वो एक कलर होगा, बाकी सबका मींस एग्रीकल्चर, बैरन, ट्रांजिशन, फॉरेस्ट, वाटर, वेटलैंड, इन सबका एक कलर होगा। ठीक है, इसको करके देखते हैं क्या रिक्लासिफिकेशन चल रहा है। आउटपुट में ये 2 कलर से आ रहा है, इसको हम दूसरा कलर असाइन कर देते हैं। तो सपोज इस तरीके का एक ये बाइनरी इमेज आप देख रहे हैं, बाकी सब लैंड यूज क्लासेस में वैल्यू 0 आ गई है। इसको आप इंफॉर्मेशन से चेक भी कर सकते हैं। देखिए पिक्सल वैल्यू 0 आ रही है ना। अर्बन पे हम क्लिक कर रहे हैं, पिक्सल वैल्यू 1 आ जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पर हमारे सारे लेयर्स जो हैं वो रिमूव, सारे अलग अलग लैंड यूज क्लासेस चले गए और हमने इसको एक बाइनरी इमेज में कन्वर्ट किया। ये क्या है? ये रिक्लासिफिकेशन है। समझ में आया? इसका एक और एग्जांपल हम देखते हैं। एलिवेशन, एलिवेशन की वैल्यू 441 अप टू 4327 इस रेंज में आ रही है। हम एब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं इंटरेस्टेड हैं, हम कैटेगराइज्ड वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं, whether the elevation is low or medium or high.
अब क्या करें, अगेन इस इमेज में अगर हम देखें तो हर एक पिक्सल के करस्पॉन्डिंग जो उसका वैल्यू होगा वो रहेगा, ठीक है। अगर हम क्लिक करें तो उसकी एक सर्टेन वैल्यू आ रही है, पिक्सल वैल्यू 769, व्हाइट में जा रहे हैं पिक्सल वैल्यू 4182, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये नहीं चाहते, बल्कि हम इसमें चाहते हैं कि हमको ये कैटेगराइज फॉर्म में मिले। अगेन रिक्लासिफाई पे जाएंगे, इनपुट एलिवेशन बेस्ड ऑन वैल्यू एंड in the classify manually reclassification, suppose फर्स्ट में हमने डाल दिया से लो एलिवेशन इज अप टू 1000, हाई रेजोल्यूशन अप टू 3031 एंड medium resolution 3031 and high resolution 4327 means 441 up to 1001, इसको सपोज हमने बोला लो, 1000 से 331 तक मीडियम एंड 3031 से 4327 तक हाई। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। अब यहाँ पर आपको एलिवेशन में जो प्रीवियसली आपको इंटरप्रेट करना था, अब कुछ नहीं करना है, पूरा इमेज 3 कैटेगरी में चला गया। हाई एलिवेशन जो कि रेड कलर से दिखाया जा रहा है, मीडियम एलिवेशन येलो कलर से दिखाया जा रहा है, लो एलिवेशन ग्रीन कलर से दिखाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब हमने क्या किया, अगेन हमने कन्वर्ट करा दिया ओरिजिनल इमेज को जो कि एग्जैक्ट एलिवेशन वैल्यूज के साथ में था, उसको हमने कैसे कन्वर्ट करा दिया, हमने उसको अलग अलग कैटेगरीज दे करके, एक रेंजेस दे करके वैल्यूज की कन्वर्ट करा दिया। ये रिक्लासिफिकेशन कहलाता है। रिक्लासिफिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो वही है कि क्या हम रेंज दे रहे हैं या क्या वैल्यूज दे रहे हैं। तो रिक्लासिफिकेशन का अगर हम थ्योरी देखें, रिक्लासिफिकेशन दो तरीके से यहाँ दिखाया गया है, रिक्लासिफिकेशन बाय टेबल, रिक्लासिफिकेशन बाय रेंजेस। पहला वाला जो एग्जांपल आपको लैंड यूज वाला दिखाया वो रिक्लासिफिकेशन बाय टेबल जैसा ही था। यहाँ पर आपने इनपुट में अलग अलग लैंड यूज हमने दिए थे, आउटपुट में हमने सब में 0 करके अर्बन में केवल 1 रख दिया था। सेकेंड है रिक्लासिफिकेशन बाय रेंजेस। अभी आपको जो एलिवेशन का दिखाया इसमें अलग अलग रेंज लेकर के उसको हाई मीडियम लो में हमने कन्वर्ट कराया, वो रिक्लास बाय रेंजेस होता है। आप या तो इंडिविजुअल, अगर छोटा जैसे लैंड यूज का एग्जांपल था उसमें 5 to 6 लैंड यूज क्लासेस थे, वहां पर आप इंडिविजुअल सेल पर हर एक वैल्यू के लिए करेंगे। एलिवेशन में क्योंकि करीब करीब 4000 अलग अलग पिक्सल वैल्यूज थी, तो वहां पर इंडिविजुअल पिक्सल से करना पॉसिबल नहीं होता, वहां पर हम रेंजेस दे करके कुछ वैल्यू देते हैं। देखिए इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस एक बार खुद से देखिए, ऑब्जर्व करिए क्या चेंज है। इनपुट पहले में देखिए वैल्यू इज 1, आउटपुट में आपको क्या होगा, रिक्लासिफिकेशन बाय टेबल में आपको रूल देखना पड़ेगा, 1 करेस्पॉन्ड्स टू x, तो आउटपुट में x, 3 करेस्पॉन्ड्स टू f, तो आउटपुट में f। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज को फिल किया जा रहा है। बी वाले एग्जांपल को देखिए, यहाँ पर अलग अलग रेंजेस में आपको चेक करना पड़ेगा। 1 फर्स्ट रेंज में आ रहा है A, 3 सेकेंड रेंज में आ रहा है इस करंट से B, इसी तरीके से बाकी वैल्यूज को फिल किया जा रहा है, ठीक है। तो ये रिक्लासिफिकेशन होता है, इसका थ्योरी देख लीजिए। तो रिक्लासिफिकेशन में पहला बाइनरी मास्किंग, आप एक बाइनरी रूल, अगेन पहला वाला जो एग्जांपल था अर्बन नॉन अर्बन का जो एग्जांपल दिया वो बाइनरी इमेज क्रिएट करने का था, 0 1 करा रहे थे।
आप क्लासिफिकेशन रिडक्शन कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी क्लासेस हैं, अगर आपको कम क्लासेस चाहिए थी, जैसे एग्जांपल में था वाटर था, वेटलैंड था, हम दोनों एक क्लास करना चाहते थे। अर्बन है उसको एक क्लास, फॉरेस्ट है, वेजिटेशन है, एग्रीकल्चर है, उन सबको एक कैटेगरी डालना चाहते थे, वो भी किया जा सकता है, वो कैटेगरी रिडक्शन की तरह होगा। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन रैंकिंग हम दे सकते हैं, जो कि हमने एग्जांपल में दिया था एलिवेशन वाले में, बेसिकली वहां पर क्लासिफिकेशन रैंकिंग हो रही थी। इसी तरीके से मेजरमेंट स्केल को भी बदला जा सकता है। तो ये रिक्लासिफिकेशन है, बहुत यूज भी होता है। हम लोग जब कुछ काम करते हैं, लाइक सपोज हमारे पास लैंड यूज लेयर है, हम कोई अर्बन स्क्रॉल की स्टडी कर रहे हैं, तो अर्बन स्क्रॉल की स्टडी करते टाइम हमें बाकी के लैंड यूज क्लासेस में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने लैंड यूज के डेटा को कन्वर्ट कर देंगे, उसको रिक्लासिफाई कर देंगे, उसमें केवल अर्बन रखेंगे और बाकी का रिमूव करा देंगे। तो ये रिक्लासिफिकेशन की स्टडी, रिक्लासिफिकेशन का एप्लीकेशन होता है। क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखें कि क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि कभी आपको कोई सीधे से नहीं बोल देगा कि आप इसको रिक्लासिफाई करो। जैसे क्वेश्चन आएगा कि consider this land use image, land use raster layer, and we are not interested in other land use classes, we are just interested in the urban and non-urban categories. Which operation will you perform and how? ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ अपने से सोचना पड़ेगा which operation to perform, तो वो रिक्लासिफिकेशन होगा ऑब्वियसली, उसी के थ्रू आप रास्टर को इस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट करा सकते हैं। ऐसे तरीके से आपका क्वेश्चन है कि सपोज you have an elevation layer with each pixel containing the exact value of elevation at that location. Suppose you are not interested in the exact elevation value, you are interested in the high, medium, low. Okay. Which operation will you perform and how? The answer will be, we will perform reclassification operation on that raster data set, and by using different ranges, reclass by ranges, we will convert the absolute data into the ordinal data, or we can convert the ratio data into the ordinal data. इसमें एग्जाम्पल्स हैं, इसको हम बस रीड आउट करते रहे क्योंकि एक्सप्लेन ऑलरेडी अलग अलग एग्जाम्पल पे कर दिया है। So example 1, consider a raster image. If we wish to ask where are all areas of forestry, an answer could be obtained by using a query or by reclassifying the image. Reclassification would result in a new image. For example, if cells representing forestry in the original image had a value of 10, and a set of rules for the reclassification could be cells with value equal to forest would take a new value of 1. Cells which do not have the value of forestry, they would take a new value of 0. Reclassification would result in a new image with all areas of forestry quoted with value 1, and all areas that are not forest, all areas that were not forest quoted with value 0. This is a Boolean image. Reclassification of this nature, producing a two-code image from a complex original image, is a very useful technique because it allows the resulting image to be used in further analysis. Second example, reclassification can be used to allocate a new value to different land use classes based on their ecological importance. Forestry and agricultural land were considered to have relatively high conservation value, while water and settlement have lower conservation value. A new image was produced after implementing the following rule, where the original value is 10, the new value will be 5, means they are giving a rank 5, 2, 1, 4 in the output based on the original value, based on the original land use. So this is what they are converting the classes into the ordinal values. This reclassification, this thing could be performed only on the raster data. You cannot perform this operation on the vector data. Okay.
Next one is overlay. Overlay could be performed on both types of data, whether you are having a raster data or whether you are having a vector data. We will discuss about the vector data later on. Right now, we are going to discuss about the raster overlay. So what is the purpose of overlay? Why do we do this overlay analysis? Anyone? Why do we perform overlay analysis? Ma'am, to get some particular content or some particular feature, or to remove some particular feature. If you want to get some particular feature, then you will do querying. The answer is when you want to integrate the data sets. Okay, when you, like, suppose you have one layer of road and one layer of forest and one layer of river, and the answer is need to be given in terms of both the things. This is the overlay that you require over there. With the help of the overlay, you can integrate the data sets. You can integrate the multiple layers by using the overlay analysis. This overlay is very important and very useful. Majority of times we have to use overlay whether we are using raster data or whether you are using vector data. Okay. So the ability to integrate data from two sources using map overlay is the key GIS analysis function. Using GIS, it is possible to take two different thematic layers of the same area and overlay them on top of the other to form a new layer. In the raster data structure, everything is represented by cells. A point is represented by a single cell, a line is represented by a string of cells, and an area by a group of cells. Raster map overlay introduces the idea of map algebra or mathematics. Using map algebra, input data layers may be added, subtracted, multiplied, or divided to produce output data. Mathematical operations are performed on individual cell values from two or more input layers to produce an output value. Thus, the most important consideration in raster overlay is the appropriate coding of point, line, and area features in the input layer. Raster geoprocessing overlay analysis use either logical or arithmetic operations. In logical, we will have and, or, not. Everybody know about these operations. In arithmetic, we have addition, subtraction, multiplication, division. Okay. So let's see a few of the examples over here. As you can see on the screen, the very first one is showing the AND operation. I suppose suppose the question is you need to identify all those pixels where land use type is agriculture A and the elevation is 7. Okay, or instead of elevation, you can say the soil rank is 7. So in this case, we have two layers. First one is showing the land use and second one is showing the soil ranking. So first, we are doing reclassification and converting that data set in the form of binary image, binary data. And then by using the AND operation where both the things are present, where both land use is A and soil value is 7. So this is how the AND operation is performed. In the second one, you can see OR operation. In the third one, there is XOR, means after doing the OR, you have to do not of that one. Okay. Next one is subtraction. Okay. Can you give the example, any use of subtraction overlay? Right. Suppose there is a question. I will give you one example. It means, as I have told you earlier during the practical session also,
it is not a big thing to perform the raster overlay or any of the function. Okay, it is not very big thing to do the reclassification. Important thing is you must know that there is a need of this operation. Like suppose if I give you the question, you have two land use layers. One land use layer of the year 2021, another land use layer of 2011. Now the question is, at how many places the changes have been occurred over a decade? How will you perform this analysis? Are you getting the question? You have one land use layer of the year 2021, another land use layer of 2011. And the question says, at which places there is a change in land use over a period of 10 years? Ma'am, at this place we can do subtraction. Your Ma'am, your voice is not coming, ma'am. Yes, there was earlier some network issue. I was asking about how to yes. So I was asking about how to get this change, this land use change. In that case, you will do the subtraction operation. Between both the layers, you need to do the subtraction operation. Madam, voice is not clear. You can find out how much change. Not clear. Madam, voice is not clear. Okay, okay, I'm getting the there is some audio issue. Is it? Is my audio okay now? Yes, ma'am. Oh, okay. Yes, ma'am. Okay. So the class is almost over. It's 1 o'clock. I will continue with this raster overlay analysis and other techniques in the next term. Okay. So that's it from my side for today. There is some chat. Meghavat Narhari, add me to this group. Meghavat, in which group do you want to? Ma'am, GIS technology, ma'am. You are already in this group. No, ma'am. I'm asking to students, ma'am. Actually, I'm not in that group actually. I do not know which group you are asking. Means you are there in the MSc. Okay, there is only one group of GIS technology. Means as far as means I do not know about any other group. But as a faculty, I am informing you that there is only one group where I am informing all these things. Okay, Okay, ma'am. this is only one platform through which I am communicating. This is MS Teams platform, and you have already been added on this GIS technology.
Okay, ma'am. Okay then. So thank you so much, all of you. The class is over for now. Thank you, ma'am. Happy Diwali. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Happy Diwali. Yes, thank you everyone. Thank you. Ma'am. Yes. Ma'am, actually, as you said that on Friday there's a holiday, I wish to say